हेलो एवरीवन, आपका क्लास सेकंड में स्वागत है। एज यू नो, मैंने एक एआई इंजीनियर की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें आपको हर कॉन्सेप्ट एआई इंजीनियर बनने के लिए सिखाया जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज इस सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे एलएलएम्स क्या होते हैं। मैं आपको आसान भाषा में एलएलएम्स कैसे वर्क करते हैं, होते क्या है, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है, वो मैं बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। What is large language model LLM? So large language models LLMs are machine learning models that can comprehend and generate human language text. ये सबसे इम्पोर्टेंट है, comprehend and generate human language text. So LLM एक machine learning model है जो आपके questions या आप जो उसको बोल रहे हो वो understand करके and then it generates back the answer. वेरी कल्ट एग्जाम्पल इज चैट जीपीटी। आई थिंक आप डेली यूज करते होंगे अपने काम में और एनी प्रोडक्टिव यूज केस। सो LLMs आर मशीन लर्निंग मॉडल्स दैट कैन कॉम्प्रिहेंड, जो आपके लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, एंड जनरेट द आंसर्स इन टेक्स्ट फॉर्म. So they work by analyzing massive data sets of language. So LLM work कैसे करता है कि they have been trained on massive data sets to understand the context of it. And जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो whatever it has been trained on terms of probability and the context understanding, it will be able to understand your question and answer it. So ऐसे ही LLM work करता है. LLMs are built on machine learning, specifically a type of neural network called a transformer model. मशीन लर्निंग का एक कंपोनेंट होता है डीप लर्निंग. डीप लर्निंग इज हेल्प्स टू मेक न्यूरल नेटवर्क. सो न्यूरल नेटवर्क समथिंग सिमिलर लाइक वर्क्स आर ब्रेन. सो जब न्यूरॉन्स होते हैं, इट्स मोर लाइक कॉन्टेक्स्ट, एक के बाद इट न्यूरॉन्स गेट्स हिट्स एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. समथिंग सिमिलर लाइक एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूरल नेटवर्क में ट्रांसफॉर्मर मॉडल, जो हम इन डेप्थ में जाएंगे इन फ्यूचर वीडियोस. बट इस ट्रांसफॉर्मर मॉडल की वजह से एलएलएम्स हैव बीन वर्किंग वेरी गुड. In simpler terms, LLM is a computer program that has been fed enough examples to be able to recognize and interpret human language or other types of complex data. So LLM एक computer program है and it has been fed. So it has been given massive amounts of data. It has been fed so many examples to recognize and interpret human language or any other types of complex data. It can be a coding language, right? So उसको massive amounts, अगर आपको मैं बताऊं, many LLMs are trained on data that has been gathered from the internet, which can go up to thousands or millions of gigabytes worth of text. तो ये कोई एक 1 GB 2 GB वाला डेटा नहीं, इट्स लाइक थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ जीबीज ऑफ वर्ड टेक्स्ट. जब आप उस लेवल पे ट्रेन करोगे, देन LLMs will be able to identify or will be able to understand your questions, will be able to understand what you are asking and will be able to give you the answers. तो आपको LLM की डेफिनेशन और बेसिक आइडिया लग गया होगा. दिस इज व्हाट LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, आर. दे हैव बीन ट्रेन्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज डेटा सेट्स टू गिव यू द आंसर्स. Understand the context and it by training on so big data. Now what are LLMs used for? अब उसके use case देखते हैं. I think सबसे one of the biggest use case which I think everyone use is ChatGPT or any other prompting tool, right? So LLMs can be trained to do a number of tasks. One of the most well-known use is their application as generative AI. So I think this is widely used. Everyone use in their daily life, I feel. Whoever is for do any productive work, I think you can even use to make your holiday calendars. And there are so many use cases. I think there's a huge list of that. So when given a prompt or asked a question, they can produce text and reply. Easy. So prompt देते हो आप या question पूछते हो, they can reply back with the answers. The publicly available LLM ChatGPT, for instance, can generate essays, poems, and other textual forms in response to user inputs. It has lot of use cases. Can generate essays, poems, and many other textual forms. So LLMs जनरेटिव एआई में तो यूज होता ही है, और भी बहुत जगह यूज होता है, जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, डीएनए रिसर्च में यूज होता है, कस्टमर सर्विसेज, चैटबॉट्स, ऑनलाइन रिसर्च, एंड देयर आर वाइड more use cases available. So LLM has a wide use case.
नाउ हाउ डू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वर्क, इसमें मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ. वी आर नॉट गोइंग इन डीप, इट जस्ट एन ओवरव्यू हाउ डज दिस वर्क. हम लोग इन डेप्थ में जाएंगे आगे आने वाली वीडियोस में. सेकेंड क्लास में वी आर जस्ट getting an idea of what large language models and how it works. So LLMs use a type of machine learning called deep learning. Deep learning models can essentially train themselves to recognize distinctions without human interventions, although some human fine tuning is typically necessary. जैसे मैंने आपको बताया था, डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग का कंपोनेंट है which helps you to make neural networks, जो it train themselves to recognize distinctions, right? It train themselves to get probability. So deep learning uses probability in order to learn. आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, ओके, वेरी इजी एंड वन काइंड ऑफ अ सिनेरियो एग्जांपल. लेट्स से द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग. ये एक स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट में ई और ओ आर द मोस्ट कॉमन. दे आर अपीयरिंग 4 times इस स्टेटमेंट में. After you train a LLM, the statement LLM will make some conclusions, and one of that conclusion could be this, कि E और O सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो in general in English language E and O will be more. It's more like a probability, right? So that these characters are amongst the most likely to appear in English language text. So that's how it conclude, right? So that's how LLM works. This is more like an overview. आपको just एक example दिया है मैंने समझाने के लिए कि it can conclude, the deep learning model could conclude these two characters comes the most in the English language. Now आइए अब जानते हैं advantages और limitations of LLMs. One of the biggest advantage is आपने LLMs को train किया, it can answer unpredictable queries, right? The data set you have trained on, but if you ask some very unpredictable query, it is able to answer those. That's what LLM's biggest characteristics is. सबसे बड़ा advantage is like it can respond to unpredictable queries. Now, एक limitation I think is one of the big limitation is if you fed false information to LLMs, it will give you a false answer. So LLMs can only be as reliable as data they ingest. जो भी डेटा उसमें जा रहा है, that much it is reliable. अगर LLMs के डेटा जिस पे ट्रेड हुआ है, it has been given कि अर्थ इज फ्लैट in all its data, whole data set, then LLMs will consider earth as flat. So if fed false information, they will give false information in response to user queries. तो आपको LLM की डेफिनेशन समझ आ गई, LLM कैसे वर्क करता है, ओवरव्यू समझ आ गया, उसके लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, आपको एक क्लियर हो गया होगा LLMs क्या होते हैं, right? So LLMs are large language models which has been trained on very large data sets like thousands or millions of gigabytes, understand the probabilities or context of the human language, to interpret it, to comprehend it, so to give you the answers back. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. आगे और इन डेप्थ में हम जाएंगे LLM की वर्किंग पे एंड मोर AI टूल्स, एंड वी विल मेक यू AI इंजीनियर इन दिस प्लेलिस्ट. इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. I'll meet you in another video or another class. Till then, keep learning.